Dear students, good evening. I am Ramdas. I welcome you to my channel Maths from Basics for you. So this is my class number 37. So in the previous class we have learned, that is in class number 36, we have learned nth derivative of arithmetic functions using the method of partial fractions. So dear students, बच्चों, dear students, मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर क्या पढ़ाया है? nth derivative of how to find the nth derivative of arithmetic functions using partial fractions का इस्तेमाल किया है और मैंने सिखाया है. तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, नया सीखेंगे. मैंने कहा था आपसे कि मैं डिफरेंशिएशन के अलावा कुछ सोच रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए कुछ अलग करके दिखाऊँ. इसलिए मैं आज इस इरादे से आया हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ नया सिखाऊँ. तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना हम ट्रिग्नोमेट्रिक सीखें. ट्रिग्नोमेट्रिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आप बहुत चतुर और बहुत चालाक बनोगे. मैथ्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. इट्स मेक्स यू इंटेलिजेंट, बट ट्रिग्नोमेट्री मेक्स यू मोर शार्पर, स्मार्टर एंड क्लेवरर. सो ट्रिग्नोमेट्री आज सीखेंगे. सो ये आप लोगों के लिए बहुत उपयोग होगा, लाभदायक होगा. तो पहले से शुरुआत हम इसकी डेफिनेशन से करेंगे. व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द functions of, it deals with the specific functions of angles and their applications to calculations. So this is very important for you, and there are totally 6 functions in trigonometry which are very important, and आप लोगों के लिए सीखना है ये 6 functions को. क्या होता है 6 functions? तो देखेंगे एक बाय एक, वन आफ्टर द अदर हम सीखेंगे. फर्स्ट रहा साइन थीटा, सेकेंड रहा कॉस थीटा, उसको कोसाइन थीटा बोलते हैं, कॉस थीटा. थर्ड टैन थीटा, चौथी नंबर पर टेंजेंट थीटा, चौथी पांचवी नंबर पे कॉट थीटा और सेकेंड थीटा. ये सब बातें देखेंगे एक सा एक व्हाट इट इज़. सो इन चीज़ों को आपको अच्छी तरह जानना है, क्योंकि यह आपको आइंदा बहुत उपयोग होगा. क्योंकि हम जो भी प्रॉब्लम करेंगे टैन थीटा, sin थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा के ऊपर करेंगे. इसलिए ये टैन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, सब कुछ आपको सीखने हैं. और हमसे अच्छा कौन पढ़ाएंगे आपको, है ना? अच्छी तरह ध्यान से, बहुत आसानी से आपको पढ़ाऊँगा. आपका सिर्फ इतना करते हुए बनता है कि आप लोग बोर्ड पर अटेंशन दो और इधर उधर मत देखो, क्लास पे निगाह रखो. सो आज हम ट्रिग्नोमेट्री एक डेफिनेशन दूंगा, डेफिनेशन का लिख लो. ट्रिगोनोमेट्री it is an important branch mathematics which deals with specific functions of angles and their calculations. To its application. To its applications. So, trigonometry क्या है? Trigonometry is an important branch of mathematics
जो डील किससे करता है, स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स से, जो एंगल्स बनाते हैं उसके ऊपर डील करता है, एंड द कैलकुलेशंस, उनके कैलकुलेशंस टू इट्स एप्लीकेशन, काम पे जो इस्तेमाल होता है उसके लिए कैलकुलेशन होता है. सो टोटली देयर आर 6 important functions. They are, first one क्या, कोसाइन थीटा. इसको कोसाइन थीटा क्या कहते हैं? दिस कोसाइन थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस थीटा. जो हम इस्तेमाल करते हैं कोसाइन थीटा नहीं बोलते, हम शॉर्ट फॉर्म में कॉस थीटा बोलते हैं. सेकेंड साइन थीटा, इसको भी हम जब इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम साइन थीटा कहते हैं, मगर पढ़ने पे सिन थीटा आएगा, मगर इसका मतलब सिन नहीं है, साइन थीटा है. सो यू रीड इट एज साइन थीटा दो इट इज सिन थीटा. डोंट रीड इट सिन थीटा. सिन का मतलब जानते हो ना, गुनाह करना. ये गुनाह करना नहीं, आप कुछ सीख रहे हो, गुनाह नहीं, पाप करना. तो तीसरा टेंजेंट थीटा. टेंजेंट थीटा को हम क्या बोलते हैं? टैन थीटा बोलते हैं, टैन थीटा बोलते हैं. सो इन कोसाइन को जो फंक्शंस हैं, इसका रेसिप्रोकल वो अलग समझाऊंगा आपको. फोर्थ वन, secant theta, this known as secant theta है, मगर भी हम इसको secant theta कहते हैं. ओके, फाइव cosecant कोसेकेंट थीटा, इसको शॉर्ट में हम कोसेक्स थीटा मगर प्रोनाउंस कोसेकेंट थीटा ही प्रोनाउंस करते हैं. एंड लास्टली वी हैव कॉट टेंजेंट. कॉट टेंजेंट, इसको हम शॉर्ट में कॉट थीटा कहते हैं, कॉट थीटा. सो इन 6 फंक्शंस को अच्छी तरह से याद कर लेना, बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको भूलना मत, क्योंकि अगर ये आप भूलेंगे तो ये आपको नहीं भूलेगा, क्योंकि इतना हर जगह इस्तेमाल होता है. जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो या इंटीग्रेशन करते हो, इसका इस्तेमाल होता है, इसका उपयोग होता है, आप इसको भूल नहीं पाओगे. सो इसके बाद हम पढ़ेंगे ये सब क्या होता है. लेट अस लर्न व्हाट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा. साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, सेकेंड थीटा क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे. सो इसको मिटा दूं? हाँ सर मिटा दीजिए, इसकी जरूरत क्या है अभी, ये कहेंगे आप? बच्चों अब साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, इसको समझाने के लिए मुझे आपसे कुछ चीज लिखनी है, उसको कॉपी कर लो. एक राइट एंगल ट्रायंगल लिखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी. सो राइट एंगल ट्रायंगल है. सो ये 90 डिग्रीज होगा.
इजंट इट? राइट एंगल में 8 to 92 था। चाहे आप इसको थीटा बना सकते हो या इसको थीटा बना सकते हो। अब ये थीटा क्या होता है? ये थीटा, सो लिखता हूं पहले, थीटा इस तरह लिखते हैं। जिस तरह अंग्रेजी में अक्षर होते हैं, जैसा ए बी सी डी अप टिल जेड, उसी तरह ग्रीक अल्फाबेट में थीटा, बीटा, अल्फा, देन म्यू, रो, थीटा एक्सेट्रा से भी ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं। सो इनमें से हम कोई भी चूज कर सकते हैं, या अल्फा ले सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं, मगर यूनिवर्सली सब लोग, सभी अध्यापक, सब गुरुजी सभी इस्तेमाल थीटा ही करते हैं, इसलिए हम भी थीटा फॉलो करेंगे। सो थीटा इज एन यूनिवर्सल अल्फाबेट व्हाट यू आर फॉलोइंग इन ग्रीक अल्फाबेट यू आर फॉलोइंग। सो लेट अस सी, अगर मैं इसको थीटा कहूं, इसका जो ऑपोजिट है, सी इन राइट एंगल ट्रायंगल, इफ यू कंसिडर दिस, द ऑपोजिट साइड टू दिस विल बी this, isn't it? This will be a opposite side. शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म ऑप्शन, और इसका adjacent क्या होगा? BC. सो अगर ये इसको थीटा हो तो ये adjacent side will be adjacent side, yes. और ये हो गया आपका hypotenuse। अगर इसको थीटा कहोगे, let us consider if instead of this, if I consider this as theta, I call this as theta 1 to differentiate. I call it this, let us say theta only. So I'll rub this also. अगर मैं इसको थीटा बना दूं, इस साइड को, एंगल ए को थीटा बनाऊं, तो ये क्या होगा? इसका ऑपोजिट साइड ये बन जाएगा, ऑपोजिट साइड ये हो जाएगा, और एडजेसेंट साइड ये बन जाएगा, और हाइपोटेन्यूज यही रह जाएगा, हाइपोटेन्यूज। सो आपने पढ़ा होगा ये 10th स्टैंडर्ड के अंदर जब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे थे, उस वक्त अपनी इसको पढ़ा होगा। तो हम अपनी सौलभ्य के लिए, अपनी आसान करने के लिए, हम इसको करने से हम इसको एंगल ले लेंगे, एंगल विल ट्रीट दिस एज थीटा। सो आई एम वेरी कंफर्टेबल I call this as theta. Okay, so the side opposite to theta is opposite side. Opposite side, I'll abbreviate it as opposite side. So this is our opposite when I consider this as theta. And what about this? This side will be adjacent side. I'll abbreviate it as what? Adjacent side. And this is our hypotenuse. I call this as H. Done. Now हम क्या सीख रहे हैं अभी? हम sin theta सीख रहे हैं। What is sin theta? First, इस रेटिंग, अगर मैं देखो, फर्स्ट साइड इस तरह लिखने से हम क्या करेंगे? आइंदा इन फ्यूचर विल यूज ओनली साइन थीटा। फर्स्ट वन साइन थीटा। सो इधर देखिए, आपका ध्यान इधर है। अगर मैं ऑपोजिट साइड ए बी को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करूं, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, अगर मैं ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाई
hypotenuse. If I divide opposite side by hypotenuse, इसको sin theta कहते हैं. So this is called sin theta. Next, now opposite side के जगह मैंने अगर adjacent side को और hypotenuse डिवाइड करूँ तो cos theta बनेगा. So supposing, and what is this? Opposite side is nothing but opposite side by hypotenuse. So this is nothing but opposite side hypotenuse. Supposing अगर मैं cos theta लूँ तो cos theta अगर मैं adjacent side डिवाइड by hypotenuse करूँ तो cos theta बन जाएगा. So इसका मतलब है adjacent side divided by hypotenuse, that is nothing but abbreviation adjacent side by hypotenuse. तो इसको cos theta बोलते हैं. So instead of writing cosine, cosine cosine, so instead of writing cosine theta I call it as cos theta. आइंदा आगे हम कोसाइन cos theta लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे. सो वी नॉट राइट इट, आसानी के लिए cos theta इस्तेमाल करेंगे. सो ये बन गया. नेक्स्ट क्या हो गया? विल थिंक अबाउट थर्ड टाइप, tan theta. So instead of writing tangent theta I call it as tan theta for convenience sake. आसान होने के लिए इधर tan theta लूँगा, ये नहीं लिखूँगा. I will not write, ये नहीं लिखूँगा, हम ये लिखेंगे tan theta. So ये क्या होगा? So this is opposite side by adjacent side. That is, what is that? Opposite side by adjacent side. Fourth one, we'll take cosecant theta. Cosecant theta, sin theta में हम क्या किया था? हमने ऑपोजिट साइड पे हाइपोटेन्यूज डिवाइड किया था, अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज डिवाइड किया था. इस बार हम क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड पे ऑपोजिट करेंगे, उसका उल्टा करेंगे. अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड, इट बिकम्स कोसेकेंट थीटा. सो दैट इज हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय opposite side, that is nothing but h by opposite side. Fifth one, secant theta. Secant theta, secant क्या है? We'll divide cos theta को हमने adjacent side by hypotenuse डिवाइड किया. इस बार क्या करेंगे? hypotenuse divided by adjacent side करेंगे. और एक वी कैन फाइंड आउट डिफरेंट वे, और एक मेथड से भी समझा के दूंगा. सो दिस बिकम्स व्हाट? हाइपोटेन्यूज divided by adjacent side. So hypotenuse by adjacent side. So lastly इसको मिटा दूंगा. We'll take 6th one. We'll talk about cot theta. Cot theta.
tan थीटा क्या कहा था हमने, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, cot थीटा विल बी एडजेसेंट साइड बाय ऑपोजिट साइड. सो ये क्या हो गया, adjacent side by opposite side. So abbreviation, that is adjacent side by opposite side. सो ये रहा 6 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जिसको आप हमेशा याद रखना है. जब तक ट्रिग्नोमेट्री रहेगा तब तक आपको याद रखना पड़ेगा. ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के भी चाहिए. ये कभी कभी दूसरों में इसके में भी इस्तेमाल किया जाता है, वेक्टर अलजेब्रा में किया जाता है और हर सब चैप्टर्स में इस्तेमाल हुआ. मगर आप मैथमेटिक्स में इसको नहीं भूल सकते क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. तो अब अपने यू हैव लर्न साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेकेंट थीटा, टैन थीटा, इजंट इट. नाउ मैं आपको दो और तरीके से टैन थीटा और कोसेकेंट थीटा को, टैन थीटा और कॉट थीटा को दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा. नाउ आई रब दिस, आई रब ऑल दिस. Now, मैंने बताया था tan theta is what? Opposite side by adjacent side है ना? Opposite side by adjacent side. Second method. Tan theta equals to sin theta divided by cos theta. अगर sin theta को cos theta से डिवाइड किया जाए तो tan theta बनेगा. देखेंगे ये आता है या नहीं. So what is sin theta? Sin theta is opposite side by hypotenuse divided what is cos theta? That is adjacent side by hypotenuse, right? So ये कैंसिल हो जाएगा. सो ये व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड. सो ये ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड आ गया. सो आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, जो समझाया तो ऐसा भी कर सकते हो ऑपोजिट साइड में. सो टू वेज. सिमिलरली ये सिमिलरली का शॉर्टकट है. सिमिलरली cot theta equals to what? Cos theta by sin theta. Tan theta is sin by cos, but cot is cos by sin. उसका उल्टा रेसिप्रोकल बोलते हैं, वो भी समझाऊंगा आगे. So इसको क्या बोलते हैं? So what is cos? Cos adjacent side by hypotenuse, isn't it? Sorry, what is cos theta? Cos theta is adjacent side by hypotenuse, adjacent side by hypotenuse divided by, इसको ठीक से लिखेंगे. So this is what is cos theta? Cos theta is adjacent side by hypotenuse divided by sin theta, opposite side by हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज कैंसिल होगा तो ये बन गया आपका adjacent side by opposite side. We know that cot theta equals to what? Adjacent side by opposite side. So what is, this is our cot theta.
cot theta is what? Adjacent side by opposite side. तो ऐसा करने से भी आपको आ गया adjacent side opposite side. Okay. So I have taught you how to get किस तरह sin theta, cos theta, tan theta को we derive it. How to find out tan theta. So आपने इस 6 फंक्शन को पढ़ लिया है. अब रेसिप्रोकल्स पढ़ेंगे. रेसिप्रोकल्स क्या होता है? Functions and reciprocals. Reciprocals. First one, sin theta. Sin theta का reciprocal क्या है? Cosecant theta. Cosecant theta मतलब that is, देखो sin theta is what? Sin theta is opposite side by hypotenuse. And what is this? Cosecant hypotenuse by opposite side. इसका उल्टा हो जाएगा. So sin theta का reciprocal cosecant theta और cosecant theta equals to cosecant theta equals to hypotenuse by opposite side. इसका उल्टा साइड का रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको. सेकेंड, cos theta. So cos theta equals to adjacent side by hypotenuse, correct? We have done this, adjacent by hypotenuse. So उसका रेसिप्रोकल क्या है? adjacent का रेसिप्रोकल is secant theta, that is hypotenuse by adjacent side. So इसका उल्टा करोगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाओ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनने से secant theta बन जाएगा. एंड लास्टली tan theta. Tan theta is what? Tan theta is nothing but opposite side by adjacent side, and this is cot theta. उसका tan theta का रेसिप्रोकल is cot theta, मतलब adjacent side by opposite side. So इन चीज़ों को आपको याद रखनी है. बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप नहीं भूल सकते, इसको हमेशा याद रखो. ओके, तो रेसिप्रोकल हमने समझ लिया. कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, क्या इसको मिटा देंगे? धर्मेंद्र जी बोलते हैं, मैं तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा. याद है? मगर हम ये नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि आप इसका नाम भी नहीं मिटा सकोगे और निशाना भी नहीं मिटा सकते. जिंदगी पर आपके साथ रहेगा और आपको भी इसके साथ रहना पड़ेगा. ओके, सो नो, कभी कभी पूछ जाता है, प्रूव दैट sin theta into cosecant theta equals to 1. Answer: sin theta equals to 1 by cosecant theta, or cosecant theta equals to 1 by sin theta. So ये क्या है? दैट इज sin theta into what is cosecant theta? 1 by sin theta. ऐसा लिखा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं. सो 1 by sin theta. तो sin theta कैंसिल करके 1 बन गया. देयरफॉर sin theta cosecant theta 1, I have proved it. सो इसका रेसिप्रोकल्स में कभी एक मार्क्स के लिए ये पूछा जाता है, तो याद रखना इसको.
कभी कभी आई लव दिस, कभी उल्टा पूछते हैं, प्रूव दैट cosecant theta into sin theta equals to 1. So we know that sin theta equals to 1 by cosecant theta, or cosecant theta equals to 1 by sin theta. So what happens with this? This equals to what? Cosecant theta into sin theta is nothing but sin theta is 1 by cosecant, 1 by cosecant theta. So cosecant cosecant cancels equals to 1. So ऐसा भी पूछ सकते हैं, वैसा भी पूछ सकते हैं, ये आपको याद रखनी है. नेक्स्ट cos theta, इसका रेसिप्रोकल secant theta. Prove that cos theta into secant theta equals to 1. We know that cos theta equals to 1 by secant theta, or secant theta equals to 1 by cos theta. So ये क्या बोलता है? So this is cos theta into what is secant? Secant is 1 by cos, 1 by cos theta. So 1 by cos, 1 by cos cancels, we will get 1. So we have proved, hence proved. Okay, copy कर लो. और कभी ये पूछा जाता है, prove that secant theta into, prove that secant theta into cos theta equals to 1. We know that cos theta equals to 1 by secant theta. So what happens to this? This is secant theta into what is cos? 1 by secant. 1 by secant, secant secant cancels, this becomes 1. So hence proved. And last, I love this. Third one, tan theta, reciprocal is cot theta. Prove that prove that tan theta into cot theta equals to 1. हमेशा ये पूछा जाता है कभी, क्योंकि थोड़े लोगों को तकलीफ लगती है ना tan cot समझने में. cot का मतलब यहाँ हिंदी में क्या बोलते हैं? cot को पलंग बोलते हैं, तो पलंग के आपको नींद आ जाती है ना, इसलिए वो ये पूछते हैं. So we know that tan theta equals to 1 by cot theta, or cot theta equals to 1 by tan theta. So what happens here? That is nothing but tan theta into what is cot? 1 by tan. 1 by tan theta. Tan tan cancels, it equals to 1. So समझ में आया? अब ये करेंगे, prove that cot theta equals to tan theta. Prove that cot theta into tan theta equals to 1. So what I'll do? What is cot? 1 by tan. Cot theta, sorry, I'll write, what is, I'll write cot as it is. Cot theta into what is tan? 1 by cot. 1 by cot theta. So cot cot cancels, you get 1. Hence proved. So ये रिलेशंस आपको अच्छी तरह जान लिया. रेसिप्रोकल्स, साइन थीटा क्या होता है, मैंने सब कुछ सिखाया है. ये इसलिए सिखाया हूँ क्योंकि मुझे आगे प्रॉब्लम्स करनी है. जब भी मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा कहता हूँ ना, तो आप लोग सोचने लगोगे टैन थीटा क्या होता है.
सर tan थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या है, sin थीटा क्या है, अब तो दूसरी तीसरी, अब ये भी हमने तो इतना कुछ पढ़ लिया, अब ये पढ़ेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कैसे एक बनता है. हाउ लेट्स लर्न how did you get sin square theta plus cos square theta equals to 1. That is important. Let's see. To prove, so you have to prove how did you get sin square theta plus cos square theta equals. So dear students, आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में पाइथागोरस थ्योरम, है ना. अब से मैं पूछूं व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, बताइए. थोड़े लोग तो भूल चुके होंगे और थोड़े लोग याद रखे होंगे. जो भी याद रखें अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं समझा दूंगा. सी द राइट एंगल ट्राइंगल, the square and the hypotenuse is equal to the sum of the squares with the two adjacent sides, opposite adjacent sides. Means to say what? So मतलब क्या बोलता है वो, let us say AB square plus BC square equals to AC square, है ना. ये है पाइथागोरस थ्योरम, by Pythagoras theorem. That is AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर is equals to स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज, यही मतलब है. तो ध्यान से सुनिए, अगर मैं इस इक्वेशन को AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और SP स्क्वायर को, अगर मैं इस इक्वेशन को थ्रू आउट अगर AC स्क्वायर से डिवाइड करूं तो क्या बनेगा. सो by equation throughout by A square AC whole square, we get what happens. अब AB square by AC the whole square plus BC the whole square divided by AC the whole square is equals to AC square by AC square. What is AB by AC? AB by AC is what? Opposite side. Correct? Opposite side the whole square divided by AC is hypotenuse square. Hypotenuse square plus what is BC? BC is adjacent square. Adjacent square by hypotenuse square equals to AC square by AC square, this becomes 1. So 1. Now we know that sin theta is equals to opposite side by hypotenuse, that is opposite side by hypotenuse, and cos theta equals to adjacent side by hypotenuse. What is OS? OS is that opposite side, isn't it? So what is opposite side by hypotenuse? This is our sin theta. So can I write this? Opposite square by AC square. I'll write this OS by H the whole square plus AS by H the whole square equals to 1. Yes, what is OS by H is sin square
So what is this? OS by H is nothing but sin theta square is there, I'll add square. What is AS by H? AS by H is nothing but cos theta. Square we have, square equals to 1. So what happens? Sin square theta plus cos square theta equals to 1. Hence proved. Isn't it? I rub this. I rub this. So we have now we have sin square theta plus cos square theta equals to 1. This is our equation 2. Supposing I keep the sin square theta on the left hand side, you know this is our LHS and this is our RHS. We have equal sign here. So towards the left of the equation sign is the equation sign is left hand side, this is the right hand side. Supposing I keep this sin square on the left hand side and move this on the right hand side, what happens? Sin square theta equals to what? 1 minus cos square theta. I call this as equation 3. Now, instead of transferring cos square, I'll keep cos square on the left hand side and transfer sin square theta. Or cos square theta equals to 1 minus sin square theta. This is our equation 4. Done? Serve this. So dear students, देखिए बच्चों, एक फॉर्मूला डिराइव करने पर हमेशा के लिए याद रह जाएगा आपको। इस एक फार्मूला से आपको तीन फार्मूला निकलता है। अगर आप एग्जामिनेशन में भूल जाओगे sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो क्या करो, पाइथागोरस से लिखो, थ्रू आउट AB स्क्वायर से डिवाइड करो और डिराइव करने के बाद ये आपको मिल जाएगा। कोई बायहार्ट करने की गुंजाइश ही नहीं, आपको ज़रूरत भी नहीं है। अब वो करनी क्या है, सिर्फ इसको डिराइव करना सीख लो। जो भी फार्मूला बनता है यूनिवर्स में, जो भी फार्मूला बनाया गया है वो सभी डिराइव किया गया है, कोई बायहार्ट करके नहीं लिखा है। इसलिए आप लोगों को भी क्या करनी है, इसको डिराइव करना सीख लो। अगर आपसे प्रैक्टिस करोगे तो ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। सो जब मैं स्टूडेंट था मैं भी यही करता था, क्योंकि मैं बायहार्ट नहीं करता, जो भी था बायहार्ट नहीं करता। थोड़े लोग बैठते हैं 2 1 2 2 2 4 2 3 6, ये सब बच्चों का खेल है, आपका नहीं। आपके लिए तो डिराइव करना है, डिराइव करके बनाना है आपको, कुछ नया इनोवेटिव, कुछ नया सीखना है, कुछ नया बनाना है आपको। जब बड़े बन जाओगे तो कुछ नया बनाओ, देश के लिए कुछ करो, आपका नाम बने, आप बड़े आदमी बनो, यही मैं चाहता हूँ। इसलिए मैं इधर खड़ा हूँ आपको पढ़ाने के लिए। इस 3 फार्मूला से याद रखना, एक फार्मूला तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा हर बच्चा जानता है, हर स्टूडेंट जानता है। ये इससे ये चीज़ बनाए, तो अगर भूल जाओगे तो इसको याद कर लो। ये आगे भी कर सकते हैं, इसको साइन देखो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। Supposing I want in terms of cos only, can I write like this? This is 1 minus cos square theta so इसका मतलब है अगर आपको डिराइव करना है तो इसके बाद भी डिराइव कर सकते हो, मगर एट प्रेजेंट फिलहाल तो आपको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको जितना कहा गया उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा कर दोगे हजम नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने इतना सिखाया है, तो आप लोगों को 3 फार्मूला बन गया है। तो प्रूफ
to prove secant square theta equals to 1 plus tan square theta. So आप पूछ रहे थे ना सर आपने ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया, क्यों नहीं बी सी स्क्वायर से डिवाइड नहीं किया, क्यों नहीं बी सी स्क्वायर से डिवाइड किया? तुम करेंगे ना, क्या होता है देखेंगे, आगे आगे देखिए क्या होता है क्या. सो फ्रॉम Pythagoras theorem we have what? AB square plus BC square BC square equals to AC square. हाँ बच्चों, आपका प्रश्न यहाँ पर आता है, AB की जगह मैं BC से डिवाइड करूँगा. डिवाइड इक्वेशन, ये क्या था हमारा इक्वेशन, दिस वाज आवर इक्वेशन 1. डिवाइड इक्वेशन 1 थ्रू आउट बाय BC square. What happens? That is AB square plus BC square plus BC square by BC square equals to by BC square. So this can be written like this. इसको हम ऐसा लिखेंगे, AB by BC the whole square plus BC by BC the whole square equals to AC by BC the whole square. So इसको मिटा दूं? हाँ सर मिटा दीजिए, कौन रोक रहा है आपको? हमारा भी बोझ थोड़ा कम होगा, ये सोच रहे हो? गलत. So now what is AB? Alright, now AB by BC from figure. What is AB? AB is what? Opposite side divided what is BC? Adjacent side. Adjacent side. Sorry. हाँ. So ये क्या हो गया? AB by BC. This is nothing but your opposite side by adjacent side. Nothing but tan theta. Tan theta है ना? तो ये क्या बन गया? I call this. Okay, let me note. So ये equation 1A में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा? AB by BC. AB by BC is tan square. We'll write tan square theta. लिख सकता हूँ क्योंकि tan होल स्क्वायर इज tan square theta बन गया. प्लस BC by BC square by BC square is 1. चलो 1 बन गया. What is AC by? What is AC? AC is hypotenuse. So now I'll rub this. What is AC? AC is hypotenuse. AC by BC. What is AC? Hypotenuse. Hypotenuse by BC. BC is adjacent side. Adjacent side. So adjacent is nothing but secant theta, because adjacent side by hypotenuse is cos theta, so reciprocal is secant theta. So this becomes what? And square. So this becomes secant square theta. What do you want? Secant square theta equals to 1 plus tan square theta. If you bring left hand to right hand side to left hand side, we got it, isn't it? So this is our equation
2, 3, 4. This is equation 5. I rub this. Students, you have got this. Supposing I keep this tan square theta on the left hand side and transfer this one to the right hand side, what happens? Now, tan square theta equals to secant square theta minus 1. This is our equation 6. This is an important relation which will be coming across when you are doing problems. Tan square theta also secant square theta minus 1. And supposing I keep this one on the left hand side and transfer this to the tan square theta to the right hand side, what happens? Or 1 equals to secant square theta minus tan square theta. Usually we write less. Usually we write secant square theta minus tan square theta equals to 1. So out of this we have got 3 relations. So I rub this. So this was our equation 5. That is nothing but, if I write this, tan square theta, this is hence proved. So secant square theta minus tan square theta equals to 1, or tan square theta equals to secant square theta minus 1. So all this are important formulae. So you have to memorize this. Memorize this. Try to remember this. Don't by heart like a small kids. So इसको याद रखना है आपको. अगर भूल जाओगे तो डिराइव करो. इतना ही आपको. So डिराइव करने में क्या मैक्सिमम एक 5 मिनट होगा ना, तो 5 मिनट अगर करोगे, बार बार करते रहोगे तो दिमाग में आपकी खोपड़ी में बैठ जाएगा, आपके हार्ड डिस्क में बैठ जाएगा. बिठा लो, एक मार के बिठा लो. ओके. सो हमने पाइथागोरस थ्योरम के अंदर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया नहीं, बी सी स्क्वायर. अब ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्रूव किया है. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या है. अब ये प्रूव करेंगे. 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंड स्क्वायर. पाइथागोरस से मिलेंगे. नाउ by Pythagoras theorem we have what? AB square plus BC square equals to AC square. Okay. सो लास्ट टाइम हमने बी सी स्क्वायर से डिवाइड किया, ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया. इस बार ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. सो दिस इज आवर इक्वेशन 1. डिवाइडिंग इक्वेशन 1 थ्रू आउट बाई व्हाट इज दैट? ए बी स्क्वायर. We get what happens? AB square by AB square plus BC square by AB square equals to AC square by AB square. What is AB by AB? There is nothing but 1 plus what is BC? BC is adjacent side.
adjacent side by AB. AB is opposite side, the whole square plus, sorry, equals to what is AC? AC is air condition, not that. AC is hypotenuse in this figure, and AB is opposite side, the square. I'll rub this. This is on the left hand side 1 plus, what is AS by OS? Adjacent side by opposite side is cot theta, cot square theta, because square we have, equals to opposite by hypotenuse sin theta, but hypotenuse by this is nothing but cosecant theta. Since we have square, cosecant square theta, so we have already wrote it. Okay, so I rub this. So this is our equation 3, 4, 5, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is our, whatever is the equation number 7. Or I'll keep this cot square theta on the left hand side. Cot square theta equals to cosecant square theta minus 1. This is our equation 8. Now I'll keep this 1 in the left hand side and transfer this cot square there. This further equals to 1 is equals to cosecant square theta minus cot square theta. This is another relation, equation 9. So dear students, be careful. So you have totally 9 formulae out of Pythagoras theorem. तो आपने देखा होगा मैंने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके 9 फार्मूलास को डिराइव किया हूँ. तो आपको भी यही करना पड़ेगा अगर आपको फार्मूला भूल जाओगे. सो फार्मूला को जितना हो सकता है उतना याद करो. अगर भूल जाओगे तो एग्जामिनेशन के लास्ट पेज निकालो, लास्ट पेज के अंदर प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस नहीं, डिराइव करो. डिराइव करके इसको लेके आके जहाँ पे इस्तेमाल करना है वहाँ पे इस्तेमाल करो. आगे भी जो फार्मूला आएगा मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह ज़रूरत पड़े तो. अगर ज़रूरत नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला लेंगे. मगर ये तो बेसिक्स है, आपको जाननी ही चाहिए. विल बिकम टोटली अलर्ट. हाँ क्या है यार, इतना अच्छा है प्रॉब्लम ये ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपको चाणक्य और बीरबल बना देगा. सही बोलता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ जब करोगे, मैंने बताया था आपको, मैथ्स आपको इंटेलिजेंट बनाएगा, मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री को स्मार्ट और क्लेवर बनाएगा. थोड़ा फ़र्क है इन दोनों में. ऑल्दो द मीनिंग इज सेम बट लिटिल डिफरेंसेस. फ़र्ज कीजिए आपने सूट सभी पहना है, बन ठन के निकल रहे हो, शूज से पहन के निकल रहे. अगर आपको टाई नहीं होगा तो क्या होगा? अगर टाई नहीं लगाओ तो जेंटलमैन नहीं बनोगे ना, सिर्फ एक साधारण से व्यक्ति होगे. टाई लगा दो, कुछ और बन जाओगे, ऑफिसर बन जाओगे. उसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री टाई की तरह काम करता है. इसको जान लो, सीख लो, समझ लो, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो डियर स्टूडेंट्स, the previous classes you have learned the basics of trigonometry. I have taught you what is sin theta, cos theta, tan theta, cosecant theta, secant theta and cot theta, and also shown you sin square theta plus cos square theta equals to 1 and tan square theta equals to 1 plus, I mean to say 1 plus tan square theta equals to secant square theta, 1 plus cot square theta equals to cosecant square theta. So now using those concept, using that formula, we are going to solve these problems. So I had told you trigonometry, mathematics will make you intelligent, but trigonometry will make you cleverer and smart. So I am going to prove it, because these problems will really kindle your mind, your smartness, and you'll start thinking multidimensionally. So you'll start thinking many ways how to tackle these problems.
So you are given one problem here, tan theta plus secant theta minus 1 divided by tan theta minus secant theta plus 1. You have to prove that is equals to cos theta by 1 minus sin theta, which is also equals to 1 plus sin theta by cos theta. So first prove this and later on you have to prove this. So very simple, but only thing, little bit of trick is employed, and this is what I like in trigonometry. Once you start doing, I hope you will start liking it. So trigonometry was my favorite, it is my favorite and will be my favorite. So I want to impart the same knowledge to you. So without wasting time, let's start this problem. So dear students, now how to go about this? So here I'll tell you what I'll do. I'll write tan theta plus secant theta minus. So yesterday nobody thought of, that is tan square theta. Now I told you this, 1 plus tan square theta equals to secant square theta. I had told you, what if I leave 1 on the left hand side and transfer this tan square theta to the other side? So it looked funny for you, but now you will see it's in reality. So what is this? So if I transfer 1 to that side, what happens? 1 equals to secant square theta minus tan square theta, right? So what I'll do for this one, I'm going to substitute this value. So what happens here? This becomes what? Secant square theta minus tan square theta divided by tan theta minus secant theta plus 1. Okay, so I put this within quotes, sorry, within a common bracket. So what is this? Don't you think this is of a square minus b square, right? Isn't it? So what is this? This is a plus b into a minus b. So this is equals to what? This will be tan theta plus secant theta minus secant theta plus tan theta into secant theta minus tan theta, right? So I have split this a square minus b square. So divided by that is tan theta minus secant theta plus 1. So for this also I will use a bracket. So dear students, if you observe it keenly, okay, out of these two equations, when we have tan theta plus secant theta minus secant theta plus tan theta into secant theta plus tan theta, what is common? Do you think tan theta plus secant theta is common? So we will take the tan theta plus common outside. So what happens to this? I'll rub this. So I'll take this, I'll take this tan theta plus secant theta, I'll take this common. So we'll have here 1 and minus sign. Secant theta minus
tan theta, correct, divided by tan theta minus secant theta plus 1. All of this? Have you followed? So if you multiply, what happens here? You have tan theta into secant theta minus tan theta plus secant theta into secant theta minus tan theta. You'll get back the same answer. So what I do next step? So that is equals to what? Tan theta plus secant theta I take as it is. So into 1 minus into secant, that becomes minus secant minus into minus plus tan theta, or instead of this, okay, I'll use this, next step I'll change that, divided by what I'll do, I'll just make some rearrangement. I'll make so here I'll make some rearrangement. What is that arrangement I'm going to do? I'll try to rearrange this. How? So we have plus 1 minus secant theta plus tan theta, right? See here, what you should get? Plus 1, we have got plus 1. We need, that is, see, we need plus 1, we have got plus 1. Minus secant theta, we have got minus secant theta. We should get plus sin tan theta, we have got plus tan theta, right? So now, can I cancel this? Can I cancel this? Because the multiplication sign, it is not division in between, sorry, it's not addition or subtraction. So since I'm multiplying this, you can easily cancel this. So I'll rub this. Yes sir, इसको मिटा दूँ? क्या करें स्टूडेंट्स, अंग्रेज़ी में बात कर आदत जो बन गई है, मुझे तो अंग्रेज़ी में आती है, भूल जाता हूँ कि मैं मुझे हिंदी में बोलना है, तो इसके बाद बहुत कोशिश करूँ हिंदी में बोलूँ, क्योंकि मुझे हिंदी में बात करना बहुत पसंद है. क्या करूँ, मुझे मैसूर के अंदर दोस्त नहीं है कि मैं हिंदी में बात करके मेरा हिंदी को बढ़ाऊँ, इसलिए यहाँ सब लोग, बहुत सारे लोग कन्नड़ में बात करते हैं, तो मुझे हिंदी का जो टच था वो निकल गया है, और कोशिश कर रहा हूँ बात करते धीरे धीरे मेरी हिंदी वापस आ जाए. थोड़ा सा अगर डिफरेंस लगा तो एडजस्ट कर लेना. आगे मैं आपसे पढ़ लूँगा कि मैं ठीक से बोलूँगा. ओके, तो क्या करें इसको, मैंने इसको रीअरेंज किया है. देखिए प्लस 1 आप तो मिल गया, माइनस सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा मिल गया. अब रीअरेंज, मैंने इसको रीअरेंज करके इसको कैंसिल उड़ा दिया, तो डिनोमिनेटर इसमें ये उड़ गया, तो बचा क्या, tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा. सो इसको मिटा दूँ? अच्छा मिटा देंगे. हाँ सर मिटा दीजिए, कौन मना कर रहे हैं आपको. तो बचा क्या, that is equals to tan theta plus secant theta, right? We are left with this. सारा उड़ गया, तो उड़ा देंगे इसको भी हम. So now इसके बाद क्या करेंगे, we make some इसके लिए कुछ सा अलग सोचेंगे. क्या tan थीटा क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए cos थीटा बाई 1 माइनस sin थीटा. आ जाएगा, क्यों नहीं, देख लो. सो क्या करेंगे इसको, this can be written as, what is tan theta, can write tan theta as sin theta by cos theta. लिखूं, लिख दिया. प्लस what is secant theta, reciprocal of cos, so that is 1 by
cos थीटा लिख सकता हूँ, लिख लिया। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, वी टेक एलसीएम, इसको एलसीएम ले लेंगे, दैट इज एलसीएम रहा cos थीटा, cos थीटा एक बार जाएगा तो दिस बिकम्स sin थीटा प्लस cos और एक बार जाएगा, 1 into 1 is 1, so that is sin थीटा प्लस 1 by cos थीटा, 1 plus sin थीटा by cos थीटा, ये आ गया। चलो इसको we rewrite this, this is nothing but he wants in this form, so this is nothing but 1 plus sin theta by cos theta. I call this as equation 1. ओके तो सी इधर आप पूछेंगे सर इधर तो sin थीटा प्लस 1 है, उधर तो 1 प्लस sin थीटा है, फर्क क्या पड़ेगा? देखिए a प्लस b is also equals to b plus a, but a minus b is not equals to b minus a. याद रखिए a plus b equals b plus a तो बन सकता है, मगर a minus b is not equal to b minus a, इसलिए इधर प्लस है ना, ऐसा भी खेल सकते हैं। तो इसको मिटा देंगे और इसको मैं इक्वेशन 1 बना दिया, तो ये क्या हो गया, now we have what is that, therefore again, therefore we have 1 plus sin theta by cos theta, इसको मिटा दूंगा, isn't it? So this is equation 1. So now divide and हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए cos थीटा बाई 1 minus sin थीटा, उसको भी ढूंढ लेंगे, उसको भी लेके आएंगे, कुछ ना तो कुछ करेंगे। तो सो व्हाट आई डू, इसको अब हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, बाई 1 माइनस sin थीटा। सो इस इक्वेशन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 1 माइनस sin थीटा, तो क्या होगा, so that is 1 plus sin theta by cos theta, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस sin theta by 1 minus sin theta. So this is a plus b into a minus b, so this is equals to what, 1 minus sin square theta by cos theta into 1 minus sin theta, आ गया 1 minus sin theta डिनोमिनेटर में आ गया, इस cos को हटाना है वो भी हटा देंगे, बट व्हाट इज 1 minus cos square, sorry what is 1 minus sin square, that is nothing but cos square, we have learnt, इसको हटा दूं, but 1 minus sin square theta equals to cos square theta, since sin square theta plus cos square theta equals to 1. So we want what, sin square theta, so that is
cos square theta equals what? 1 minus sin square theta. So we have 1 minus sin square theta. 1 minus sin square theta is nothing but cos square theta. इसको हम इसको क्या करेंगे? cos square theta देखेंगे. This is equals to what? So that is 1 minus sin square theta by cos theta into 1 minus sin theta. This is nothing but equals to what? Cos square theta by cos theta into 1 minus sin theta. So here cos will go, one cos will go from this. So what you are left? Cos theta by 1 minus sin theta. Cos theta by 1 minus sin theta. आ गया? So that is cos theta by 1 minus sin theta. I call this as equation 2. What was equation 1? Equation तो हमने equation 1 हटा दिया हमने. So this was our equation 1. This was our equation 1, isn't it? So and equation 1 is what? That is 1 plus sin theta divided by cos theta. This is our equation 1. So on the left hand side what we have? Tan theta. Therefore tan theta plus secant theta minus 1 divided by tan theta minus secant theta plus 1 equals to what? Cos theta by 1 minus sin theta. I'll rub this also. This is over. And this is also equals to what? 1 plus, this is also equals to 1 plus sin theta by cos theta. Hence proved. So जो उसने पूछा था हमने उसको दे दिया, बिल्कुल दे दिया. तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा सब्जेक्ट है आपका इंटरेस्ट को क्रिएट करता है. देखिए कितना अच्छा है, इधर याद रखने का कोई गुंजाइश ही नहीं. आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, उसको कहाँ अप्लाई करना है उसको कीजिए. So I told you yesterday, see my method of teaching is what? Yesterday in the basics, that is yesterday's class, I took that class yesterday. So in the previous class, what I have taught you? I have taught you the basics of trigonometry, right? And later on I have taught you what is sin theta, cos theta, tan theta, everything. After that I taught you what is the relationship between sin and cos and other things and its reciprocals, right? Then I taught you sin square theta plus cos square theta is 1. 1 plus tan square theta equals to secant square theta, 1 plus cot square theta equals to cosecant square theta, all this thing taught. So those formulas we are applying here, we are finding its application here. So that's why trigonometry is very interesting and it will make you to think, because it makes, see जैसा है कि आप लोग एक सस्पेंस पिक्चर देख रहे हो, उस सस्पेंस पिक्चर के अंदर जो सस्पेंस ओपन हो रहा है
वो यहाँ पे मिलेगा आपको। सो कैसा करेंगे, कैसा ढूंढेंगे? जब मैं स्टूडेंट था ना, जब मैं एक हिसाब करता था, अगर उसका जवाब नहीं मिला ना, रात से भी सोचता कैसा करना है, किस तरह करना है, इसका सोल्यूशन क्या है। सो ये सब्जेक्ट वैसा है। सो आपको इस सब्जेक्ट के अंदर दिलचस्पी लाना है, इंटरेस्ट जगाना है, करो, बहुत आसान है। एंड आई डेफिनेटली मैं आपका पूरा मदद करूँगा कि आप भी स्मार्ट, क्लेवर, इंटेलिजेंट, वॉट एवर यू वॉन्ट, you will become. So what I'll do is, in my first part of my video, this what I'm going to post today, I want to show you the importance of trigonometry. That's the reason I have thought of making one part 1 without this problem, but later on I felt, let me generate that interest in you. If you do this problem, how you will feel. For that reason, along with that basics, I am including one problem, and henceforth will be doing only to prove problems on this type. So this will be very interesting. Part 2 don't miss. This is my part 1. Part 2 I'll be regularly posting now. Instead of making 3, 4 or 2 hours, 3 hours video, I'll make short videos depending upon circumstances. I cannot predict how it is, because जैसा इसकी ज़रूरत पड़ेगा मैं ऐसा इसके हिसाब से वीडियो बनाऊंगा आपके बेनिफिट के लिए. So I'll end this part 1 of my trigonometry. We'll meet very soon in part 2. So dear students, please prepare yourself, and I want you to know and be conversant with all this trigonometric identities or ratios and the formulae. If you are well versed with it, definitely you will not have any problem. You and I will not have any problem to waste our time. We'll go step by step. So as I had told you earlier, along with differentiation, I am planning to take some other chapter. So here I am with trigonometry. So I'll give one more surprise. Parallelly, I'll take one more chapter depending on the situation, availability of time, and I'll try to help you, because by March, April you will be having exams. Before that, as much as possible, I'll try to help you out. So dear students, so let me stop here. We'll meet again very soon, very shortly. Until then, good night. Take care. God bless you. Thanks for watching this watching this video. So dear students, before I conclude, please like, share and subscribe to my channel, which is very important. Yes, I deserve it, for my hard work. Please be sincere, touch your heart and see what I have not taught you. Really, I have been teaching you with my lot of hard work. It takes a lot of time to make a video, and I have to dedicate myself for this. So you place yourself in my position and think, if somebody for your hard work don't reward you, how would you feel? So dear students, about this I will not compel you, it's left to your choice. So dear students, we'll end here. Good night, take care, God bless you, bye.